these countries. किरिबाती से राष्ट्रपति की विशेष दूत महामहिम तिकोवा लूता का आगमन। Her Excellency Ambassador Tikoa Luta from Kiribati. The motto of the country is health, peace and prosperity. These are small island countries with a wonderful, beautiful ecology and environment, and very, very fragile in terms of environmental balance. A great onus on the rest of the world in terms of how we consume, because all consumption leads to environment degradation. And here we have heads of states from 14 Pacific islands who are no doubt going to talk about the impact of how the rest of the world lives on their island nations. Her Excellency Ambassador Tikoa Luta with the President of India, Shri Pranab Mukherjee. सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों के साथ साथ भू सामरिक दृष्टिकोण से भी प्रशांत द्वीप समूह देशों की खासी अहमियत। फिजी के प्रधानमंत्री जोसैया बेन एमारामा, दरबार हॉल में उपराष्ट्रपति महोदय श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज स्वागत करते हुए राष्ट्राध्यक्षों का। From the Republic of Fiji, the Prime Minister, the Honorable Josiah V. Bainimarama. The capital of Fiji, Suva. Fiji got independence from the United Kingdom on the 10th of October 1970. And it became a republic on the 7th of October 1987. Total area of this island nation is 18,274 square kilometers. It's an island country in Micronesia in the South Pacific Ocean, northeast of New Zealand. An archipelago of more than 332 islands. In fact, one of the most developed economies in the Pacific, with its abundance of forest, mineral and fish resources. फिजी में काफ़ी संख्या में प्रवासी भारतीय निवास करते हैं और वहाँ के आर्थिक और व्यापारिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान प्रवासी भारतीयों का। फिजी ने ही भारत प्रशांत द्वीप समूह देशों के मंच के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। और अब महामहिम पीटर ओनील का आगमन। एक के बाद एक अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री महामहिम श्री पीटर ओनील, जिनका आगमन हो रहा है। इस समय स्वागत राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा फिजी के प्रधानमंत्री जोसैया बेन एमारामा का। भारत और फिजी के बड़े ही प्रगाढ़ संबंध हैं। And now the arrival of the Prime Minister of Papua New Guinea, His Excellency Peter O'Neill, being received by the President, Shri Pranab Mukherjee. The motto of Papua New Guinea is unity in diversity. His Excellency Peter O'Neill assumed office on the 4th of August 2012, and the capital of Papua New Guinea is Port Moresby. समोआ के प्रधानमंत्री माननीय लुइलाइपा लुपेसोलियाई साइलेले माइएले गाओई का आगमन। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अवसर भारत प्रशांत द्वीप समूह देशों के मंच के दूसरे शिखर सम्मेलन का हमारे देश में आयोजन। मुख्य आयोजन स्थल राजस्थान की राजधानी जयपुर। और आज माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी
इन राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे हैं। And this is the Prime Minister from Tuvalu. Arriving here. दरबार हॉल में माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्वागत राष्ट्राध्यक्षों का। 3 देशों के राष्ट्रपति, 7 देशों के प्रधानमंत्री, माइक्रोनेशिया के उपराष्ट्रपति और सोलोमन द्वीप समूह के उप प्रधानमंत्री का आगमन इस शिखर सम्मेलन के लिए। Prime Minister Emile Sosene Sopoaga here at the Central Hall. और अब वानुआतू के प्रधानमंत्री माननीय सातो किल्मन प्रवेश करते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर दरबार हॉल में। Prime Minister Sato Kilman from the Republic of Vanuatu. एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर प्रशांत द्वीप समूह के देशों के मंच के लिए। भारत जिसके दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आमंत्रित राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करते हुए। One of the critical areas of synergy for this meeting is the development and advances India has made in renewable energy. In fact, India has a coastline of more than 7,500 kilometers and more than 1,000 islands. So we have common concerns. माइक्रोनेशिया के उपराष्ट्रपति माननीय श्री योसिवो पालिकुन जॉर्ज का आगमन होता हुआ। From the Federated States of Micronesia, with the motto of peace, unity, liberty, the Vice President, the Honorable Yosivo Palikun George. Micronesia is a part of a sub-region of Oceania, comprising thousands of small islands in the western Pacific Ocean. Its capital, Palikir. It's a United States associated state consisting of 4 states from west to east: Yap, Chuuk, Pohnpei, and Kosrae. India's trade and investment with these countries is a great area of potential growth, beneficial to both nations, all nations. माइक्रोनेशिया के उपराष्ट्रपति माननीय श्री योसिवो पालिकुन जॉर्ज, माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा उनका स्वागत। भारत प्रशांत द्वीप समूह देशों का मंच, विश्व मानचित्र पर खास पहचान बनाने की कोशिश। दरबार हॉल में आमंत्रित अतिथिगणों का स्वागत। मार्शल द्वीप समूह के राष्ट्रपति महामहिम श्री क्रिस्टोफर जे लोआक आगमन होता हुआ। His Excellency, the President of Marshall Islands, Christopher J. Loak, assumed office on the 10th of January 2012. The cavalcade, the carcade of VIPs, gently making their way around the Jaipur column. The President of India, the Prime Minister of India,
and the External Affairs Minister here at the Central Hall, awaiting to greet the dignitaries as they alight at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. पलाऊ के राष्ट्रपति महामहिम श्री टॉमी ई रेमेनगेसाउ जूनियर, His Excellency Tommy E. Remengesau Jr., the President of the Republic of Palau, an island country located in the western Pacific Ocean, with a population of around 21,000, is spread across 250 islands. It is gifted with diverse underwater resources and is considered among the top in underwater attractions of the world. In fact, during President Remengesau's administration, this tiny nation had been elevated to becoming known as an unheralded leader among the international community through environmental initiatives. विशिष्ट अतिथिगण, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी का आगमन होता हुआ न्यूए के प्रधानमंत्री श्री टोके तलागी, From Niue, the President has arrived at the forecourt and is being escorted. And here, the previous VIPs and heads of state who arrived are meeting the dignitaries. In fact, Niue is a self-governing state in free association with New Zealand. और अब आगमन नाउरू के राष्ट्रपति महामहिम श्री बैरन दिवावेसी वाका का। माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित। From Nauru, the President, His Excellency Mr. Baron Devavesi Waka. The motto of the country, God's will first. He assumed office on the 11th of June 2013 and leads a 19-member unicameral parliament. In fact, Nauru is an island country in Micronesia in Central Pacific. It's the smallest state in the South Pacific and the third smallest state by area in the world, behind only the Vatican City and Monaco. प्रशांत द्वीप समूह के देशों के साथ भारत के प्रगाढ़ और मधुर संबंध हैं और इन देशों के साथ स्थायी और परस्पर लाभप्रद संबंधों का निर्माण ही इस शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य। और इसी भावना को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने पिछले वर्ष संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीप समूह देशों के मंच का गठन किया था, जिसकी पहली बैठक, पहला शिखर सम्मेलन फिजी की राजधानी सुवा में आयोजित किया गया था और दूसरे सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। So this is a true moment of unity in diversity, even if it is linked to a particular region in the world. These are diverse countries with diverse languages, diverse traditions, and yet a commonality of agenda. The agendas which include people-to-people cooperation, people-to-people understanding, and economy-to-economy growth. India, as a regional and an emerging global leader, understands its role. It has to lead by example. We not only have a lot to learn from small island nations that share their expertise and their experiences with us, we have a collective way to grow together.
भारत प्रशांत द्वीप समूह के देशों के मंच का दूसरा शिखर सम्मेलन। इस शिखर बैठक में इन देशों में से अधिकांश से सर्वोच्च स्तर पर भागीदारी इस मंच को और सुदृढ़ करने के लिए भारत तथा इन देशों की दिली इच्छा और उम्मीद को दर्शाती है। भारत क्षमता निर्माण और अवसंरचना सृजन जैसे क्षेत्रों में प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों को सहायता प्रदान कर रहा है। In fact, FIPIC summit provides an opportunity to us to have interaction at the highest political level with the countries, not only at bilateral levels, but also with the South Pacific region as a whole. And these Pacific Island countries have been looking towards India for its assistance in the implementation of their developmental programs. India has therefore made 10 announcements at the end of the first FIPIC summit in November 2014 and implemented 5 items, and the remaining 5 are at various stages of implementation. शिखर सम्मेलन, राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति, विचार विनिमय, विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण अवसर, अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने का मौका, अलग अलग योजनाओं को मूर्त रूप देने की पहल और सबसे महत्वपूर्ण भारत का इन देशों के साथ सक्रिय सहयोग भू सामरिक दृष्टिकोण से भी जिसकी खासी महत्ता है। In fact, natural resources are a great area of synergy. The islands of the South Pacific have sovereignty over 20 million square kilometers of the Pacific Ocean. They're small islands, they have limited economic resources and small populations. Many of them find it difficult to maintain a critical mass for economic activities in a global world and have become the highest recipients of financial and technical assistance. They also face the growing challenge of climate change and rising sea levels, affecting water supply and fishing resources. And yet, some of them are endowed with natural resources, fisheries, timber, mineral, and hydrocarbons. Critical resources for the rest of the world too. So all of them now getting together for a special photo op, a picture, to be captured for posterity, to be captured for newspapers and publications for tomorrow morning's news. भारत प्रशांत द्वीप समूह देशों के मंच की पहली शिखर बैठक फिजी में हुई थी, जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए अनेक कार्यक्रमों और पहलों की घोषणा की थी। इसी के तहत वार्षिक सहायता अनुदान जो भारत द्वारा प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीपीय देशों में से प्रत्येक को प्रदान किया जाता है, अब $2 लाख का है। राष्ट्राध्यक्षों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ, एक अविस्मरणीय अवसर। शिखर सम्मेलन का प्रमुख आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल होगा। आज इस विशिष्ट शिष्टमंडल का व्यस्त कार्यक्रम है। राष्ट्रपति महोदय जिनकी आगवानी कर रहे हैं ऐतिहासिक दरबार हॉल में। उसके बाद इस शिष्टमंडल का ऐतिहासिक ताजमहल को देखने जाने का भी कार्यक्रम है और शाम के समय भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा शिष्टमंडल के स्वागत में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी विशिष्ट अतिथिगणों के साथ। And as the majestic chandelier suspended 33 meters from the top casts a beautiful golden glow and the photographers pop their flash bulbs to capture this picture, this is a historic room indeed. It was here that Indian leaders gathered at 8:30 a.m. on the 15th of August 1947 to witness the swearing-in ceremony of the new government headed by Jawaharlal Nehru by the Governor-General of the newly declared Dominion of India, Lord Mountbatten. And it was in this hall in 1948 that India's first Governor-General, Chakravarti Rajgopalachari, took his oath.
भारत प्रशांत द्वीप समूह देशों के मंच का दूसरे शिखर सम्मेलन का अवसर, जिसके तहत सौर ऊर्जा, आपदा उपशमन, निर्माण क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना आदि क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अनेक भारतीय कंपनियों ने इन योजनाओं में शिरकत की है। So as the summit moves on to tomorrow, where discussions, deliberations will take place, we will get a sense of the challenges of these nations, and they will get a taste and a sense of India. What they saw today was grace, hospitality, and ceremonial reception. It's truly wonderful, the recognition at global platforms for collaboration, for cooperation, that we cannot grow individually, that we need to share our strengths, also understand our weaknesses, and address our challenges together, because the strength that is there in synergy and working together can never be individual. As you can see, the early morning breeze picking up a little, flags fluttering a little faster, and another momentous day in regional cooperation. उम्मीद यही है कि इस भारत प्रशांत द्वीप समूह देशों के मंच के दूसरे शिखर सम्मेलन के माध्यम से इन सभी देशों के समक्ष सहयोग के नए आयाम स्थापित होंगे और ये सभी देश भारत के साथ मिलकर प्रगति के नए पथ पर अग्रसर होने में कामयाब होंगे।